Good evening, you're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. 10th of February is when a large chunk of western Uttar Pradesh goes to vote. In all, 58 seats go to vote in the first phase of polling. One thing that we have heard in terms of a poll plank is polarization. They say that it is going to be western Uttar Pradesh which will be or give the true test whether polarization is actually an issue on the lines with which voters will vote this election. The other issue which has come out very strongly is on Muzaffarnagar riots. We have seen the BJP invoking the Muzaffarnagar riots time in and time again. From Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, bringing up the riots of Muzaffarnagar, urging people not to forget what had happened during that time and all the Hindus that need to come together. On the other hand, today the Prime Minister addressed his first virtual rally for the first phase of elections in the state of Uttar Pradesh. He did not name Muzaffarnagar, he did not name Jats, Kisans, who are a huge factor that play in influencing the vote in this area, didn't name any one of them, but clearly hinted that they all need to come together in terms of the Jats together and vote en masse. And that the BJP, he used the analogy of the roti and he said that the roti and the BJP have always come together to fight off divisive forces. By roti, clearly viewers, the Prime Minister hinted at the Kisan or the Annadata, and in western Uttar Pradesh, the Annadata is the Kisan, who in terms of caste is Jats. Battleground West Uttar Pradesh, 58 seats in the first phase of polling. कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें कभी परास्त नहीं कर पाएगा। The Prime Minister's virtual rally for West UP. Neither did he name the Jat community, nor did he stress on farmers. But by connecting the roti to the BJP's lotus was hint enough that the roti given by the Annadata in western Uttar Pradesh, mostly Jats, along with the BJP, have always fought divisive forces together. कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। Again, without mention of Muzaffarnagar or polarization, Prime Minister Modi hinted at the Muzaffarnagar riots. कोई भूल नहीं सकता है 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। Hitting out at the Samajwadi Party over law and order and appeasement. पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी, उत्सव। This election in 2013, Muzaffarnagar riots had emerged as the cornerstone of the BJP campaign. No opportunity lost in reminding the voter the Samajwadi Party's failings in governance then. The Samajwadi Party chief hitting back with equal fervor. आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उनके जो मुख्यमंत्री थे उन पे कितने मुकदमे थे।
उनके डिप्टी सीएम पर कितने मुकदमे थे। अगर दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के अगर हम मुकदमे देख लें तो इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं है जितने इन पे दोनों पे मुकदमे थे। The Uttar Pradesh poll pitch is getting higher by the day. Akhilesh Yadav filed nominations from the Kadhal constituency and the BJP fielded against him sitting Union Minister SP Singh Baghel. The Election Commission has also slightly relaxed campaign rules amidst the pandemic with permission of 1,000 people allowed in outdoor election rallies while 500 allowed indoors, while 20 people are allowed for door-to-door campaign. These guidelines are there till the 11th of February after the first phase of polling on the 10th Feb. The Uttar Pradesh elections are poised to be tectonic. The narrative till now has been highly polarizing, and West UP will be the true test if the polarizing strategy will work or not. Bureau Report, India Today. All right, let's take that question. Will the polarization strategy work in Western Uttar Pradesh? To our panelists this evening, I have Dr. Kaushal Mishra, spokesperson, Bharatiya Janata Party. I have Ram Pratap Singh, spokesperson, Samajwadi Party. In a short while, I'll also be joined by Rahul Srivastav, my colleague. Dr. Mishra, बात जमीन पे ये है कि किसान का गुस्सा बहुत तगड़ा है, जाट का गुस्सा बहुत तगड़ा है, इसीलिए बार बार 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे याद दिलाए जा रहे हैं। देखिए, जहां तक रही किसानों की बात और किसानों के काम की बात, तो आपको काम बता देता हूं। पहले आप ये देखिए कि पहली बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी से अगर हम कंपेयर करें तो 36,000 करोड़ का भुगतान किया गया है 86 लाख किसानों को। और पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो कर्जा देती नहीं है और कर्जे को माफ करने का वादा लेकर के वोट भी नहीं देती। हमेशा इसके पहले जो भी सरकारें आई हैं वो किसानों को कर्ज देती हैं, फिर कहती हैं हम कर्ज माफ करेंगे, उसके एवज में उनसे वोट मांगती हैं और फिर अगली बार वादा करती है। जैसा आप राजस्थान में देख रहे हैं, राहुल गांधी जी वहां वादा करके आए थे पर उन्होंने कोई भी कर्ज माफ नहीं किया। हमारी सरकार एक पहली सरकार कर्जा नहीं दे रही है, कर्जे को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन उनके अकाउंट में 6,000 रुपए सालाना पैसे डाल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें कि करीब करीब इसके पहले जो समाजवादी पार्टी थी उसने 92,000 करोड़ गन्ने का भुगतान किया था, हमने 1.5 लाख करोड़ गन्ने का भुगतान किया। अगर हम खरीद की बात करें तो 220 मीट्रिक टन एमएसपी पे उन्होंने खरीदा था, हमने 476 लाख मीट्रिक टन गन्ना खरीदा है। इसके अलावा जो भी अगर हम देखते हैं किसानों को, किसान ज्यादातर गरीबी रेखा के नीचे ही आते हैं, मेजॉरिटी किसान, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उन गरीबों को जी आजाद भारत के 70 साल बाद भी शौचालय नहीं मिला था, नल से जल नहीं मिला था, जी घर नहीं मिला था, मुफ्त स्वास्थ्य नहीं मिला था। आज आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख का सालाना बीमा है पूरे परिवार को। और तो डॉक्टर मिश्रा, महामारी में आप पहले प्रवक्ता होंगे जिन्होंने इतनी सारी चीजें गिना दी हैं जो आपकी पार्टी ने वेस्टर्न उत्तर प्रदेश किसान के लिए की है, तो फिर क्या जरूरत है जब योगी जी बोलते हैं, जब भी बोले हैं उन्होंने इन चीजों के बारे में तो बोला नहीं है। वो तो बोलते हैं 2013 मुजफ्फरनगर को याद करिए, हिंदू को इकट्ठा होना चाहिए। आपके जो डेप्यूटी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो बोलते हैं मथुरा में मंदिर बनेगा, वो तो नहीं बताते हैं ना ये सब। तो फिर इन चीजों की कहां जरूरत पड़ गई कि ये चीजें बोलनी पड़ रही हैं? और अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो क्या जरूरत पड़ गई कि चौधरी अजीत सिंह के जो लड़के हैं जयंत चौधरी, उनको न्योता देना पड़ा? देखिए, राजनीति में किसी भी विपक्षी को और अपने पुराने एलआई को, ये जयंत चौधरी जी की पार्टी हमारी एलआई रही है, अपने पुराने एलआई को बुलाना ये नॉर्मल तरीका होता है राजनीति में। अब बात आई और दंगों का जिन बार-बार बोतल से निकालना, मैं आ रहा हूं उस पे। आप ये समझिए, जब इलेक्शन चालू हुआ था उस समय जिन्ना को लाने वाला कौन? अखिलेश यादव। ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला लाने वाला कौन? अखिलेश यादव। रही सही बची कसर जो थी वो कांग्रेस ने हिंदू और हिंदुत्व को डिवाइड करके, माँ और मातृत्व को डिवाइड करके, पिता और पितृत्व को डिवाइड करके दिखा दी। अब बात आती है कि अगर जब सब ऐसा करते हैं तो जो राजनीति में जो पुरानी सरकार होती है उसको कमियों को गिनाना भी राजनीति है। और बड़ा साफ बता रहा हूं, मुजफ्फरनगर का जब दंगा हो रहा था, वो दंगा क्यों हुआ आप सभी को पता है। उस दंगे के समय आजम खान जी ने फोन करके अपराधियों को छुड़वाया और वहां पे वो सब बैठ के मुजरा देख रहे थे।
पूरी फैमिली। 5 शहरों में केवल बिजली देते थे, वीआईपी शहर, सफाई जैसा वीआईपी शहर को शहर मिलता था बिजली, बाकी पूरे प्रदेश में किसी को नहीं मिलती थी। आज 18 घंटे से 24 घंटे 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे याद दिलाना। मैं आपके पास फिर आऊंगी, अभी मैं जो प्रवक्ता हैं हमारे समाजवादी पार्टी और जो मेरे कॉलीग हैं वो जुड़ गए हैं, पर सवाल पूछूंगी, सोच लीजिए क्या जवाब है। जब योगी जी 80-20 की बात करते हैं, ये पोलराइजेशन है कि क्या है? कौन है ये 20%? ये सोच लीजिएगा, वापस आऊंगी। लेट्स कट अक्रॉस टू आवर समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन राइट नाउ। सर, द फैक्ट इज कि ये आपको भी उतना ही सूट करता है जो पोलराइजेशन, राम प्रताप जी, जो बीजेपी कर रहा है? Thank you. I would say it's BJP, which is who are masters at this polarization on the basis of religion, on the basis of caste, and I think their politics thrives on this kind of polarization. For us at Samajwadi, if you've been following Shri Akhilesh Yadav-ji on Twitter and all his sankalp for this election campaign, we are trying to drive a very positive campaign, which is based on real issues. The BJP spokesperson just rattled out some data about farmers. Well, farmers' issues are real. And the biggest problem for the farmers in Uttar Pradesh is that they are not able to get a fair price for their produce. This government in the center, the BJP government, promised at the time of withdrawal of the farm laws that they will work towards creating an NSP regime. They have done nothing. That's why the Kisans and the farmers are going towards the Vishwas Ghat Divas. Now, Akhilesh Yadav-ji has gone ahead and promised that when we form the government, we will bring in a very effective MSP regime for the farmers of Uttar Pradesh. We have talked about the real issues of farmer poverty, where we are talking about farmer pensions. We are talking about irrigation subsidies. We are talking about free electricity. So we are driving an agenda which is issue-based. So unlike BJP, which is Ram Pratap Singh, you say you're driving an agenda which is issue-based. But the fact is, you really can't, wash your hands from the past. The very fact that your party was blooded on the terminology of MNY, which is Muslim and Yadav, you can't take that away. You've got to at least, come to terms what it was. Akhilesh Yadav-ji recently, when he was asked the same question, he said, for us, MNY stands for Mahila and Yuva. Those are the issues now. All right, so is that a new so is that a new Samajwadi party? That's another question. But let me bring in right now a national affairs editor who's traveled extensively through the belt of Western Uttar Pradesh. Rahul, the fact is, polarization, the true test of polarization will be seen when Western Uttar Pradesh votes. Do you agree? Preeti, I missed the last part of your question. Just, Rahul, that the true test of polarization will be seen this time when the west belt of Uttar Pradesh votes. And, the other question which you can probably club with that is, will there be a transfer of votes? Will a Kisan who's primarily Jat voting for the RLD, will he be able to vote for the Samajwadi party as well? Preeti, in this region, I will say that everybody loves a good polarization. And you see, what is happening right now is a very interesting phenomena. In a situation where government is facing anti-incumbency, there are certain very tangible issues gaining traction on the ground in form of the farm protests against the BJP. In that scenario, there are clubbing in of also issues like unemployment, price rise and others. The BJP has very little to beat the Samajwadi party with. It's a party which has been out of power for the last 5 years. Now, in that scenario, the BJP's best hope could well be that people don't forget the nightmare of 2013 riots. So a reminder in form of dangai and dabang, in form of celebrations. You remember there was a controversy in 2013 when the riots were happening, and after the riots you had people living in cold in several camps who were pushed out from the Muzaffarnagar riots zones, and at that time there was a Safai festival. So these are reminders being served by the BJP, because the BJP's best bet in this area is as much polarization it can recreate or reenact in the Western UP region. Why? Primarily because the Jat vote is very unhappy. In that, what the BJP is trying to do is, those who don't forget the Muzaffarnagar riots
will eventually go with the BJP means if the BJP's vote bank in terms of upper caste and certain non-Jatav SCs, non-Yadav OBCs stay with the BJP has very good chances of winning the sizable number of seats it did last time, or maybe perhaps close to that. But if a large number of Jat voters are moving out of the BJP fold and eventually going to the RLD for that Chaudhrahat element which I have been saying, primarily because they want to gain hold of this area, the kind of dominance the Jats always had, and in the BJP they are like a fish in a big pond. And they don't want that. They want to revive their leadership. Ajit Singh lost last time. Jayant Chaudhary lost. They don't have leaders. They don't have dominance left in UP politics. In that scenario, the BJP is in trouble. But there is another hope. One, Jats don't vote in a bloc because they don't have subcastes, but they have Khaps. Once the Khaps come together, they vote together. Right now, several Khaps are divided on whether to go with the BJP or the RLD and the Samajwadi Party alliance. The second is the transferability of the Muslim vote from the Samajwadi Party to the RLD is the easier part of the story. Primarily because the Muslims have very little option. They want to defeat the BJP, so they may go with the Jats and the RLD and the SP combined. But that's where the trouble is. Some Jats may not get transferred by the RLD to the Samajwadi Party, and that may again create fissures as far as the alliance is concerned, and that means the demography. And that is why I think the Western UP story is going to be a constituency-wise management story for all political parties. Well, the fissures are already out in the open. A lot of prominent community Jat leaders have already rejected the Samajwadi Party candidates fighting on an RLD ticket on many key constituencies where Western Uttar Pradesh is concerned. Dr. Mishra, I'll come back to you. बताइए सर, आपसे जाने से पहले पूछा था ये 80-20 का क्या मामला है? 20 कौन है, 80 कौन है? 80 कौन है? वो लोग जब बटाला हाउस का इनकाउंटर होता है तो जो लोग खुश होते हैं, जो लोग मोहन शर्मा जी के साथ खड़े होते हैं, वो 80% है और 20% वो जो उसके विरोध। सर उल्टा बोल रहे हैं, देख लीजिए। मैंने उल्टा बोल दिया आपने। मोहनलाल शर्मा जी के साथ जो लोग खड़े हैं वो 80% हैं, यानी जो पुलिस के साथ खड़े हैं वो 80% हैं, जो अपोज कर रहे हैं वो 20% हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के क्रिकेट में जो पटाखे छोड़ाते हैं वो 20% है, जो इंडिया की विन को सेलिब्रेट करते हैं वो 80% है, जो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक वो 80% है, जो मातम मनाते हैं वो 20% है, जो क्वेश्चन उठाते हैं वो 20% है, जो धारा 370 खत्म होने पे अपोज करते हैं वो 20% है, बाकी 80% है। और आप बहुत मतलब आपके पॉलिटिकल एडिटर हैं, आप सोच के देखिए, मैं अभी नया हूं पॉलिटिक्स में, शायद मैं ये समझा हूं जो पॉलिटिक्स में, आप देखिए इससे पहले प्रदेश में क्या होता था? प्रदेश में होता था कि मुसलमानों को जोड़ो और हिंदुओं को जातियों में तोड़ो, ये राजनीति चलती थी। तो आप उसकी उल्टी राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ो, मुसलमानों को क्या कर रहे हैं? अरे सुनिए तो, जी हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। आप ये बताइए जितनी योजनाएं मैंने गिनाई हैं, अभी लिस्ट है पूरी, वो सभी जाति धर्म देख के नहीं आ रही है। जब डीबीटी ट्रांसफर हो रहा है तो जाति धर्म देख के नहीं आ रहा, जब घर बन रहा है तो जाति धर्म देख के नहीं आ रहा, जब सड़कें चल रही हैं, जेवर एयरपोर्ट चलेगा तो जाति धर्म देख के नहीं आएगा। लेकिन अभी तक की पहली पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है और काम भी कर रही है। लेकिन डॉक्टर मिश्रा जी, जीतना भी जरूरी है। बहुत सही कहा आपने, पर कल ही की बात है जब आप ही के सीएम मुजफ्फरनगर और हिंदुओं को एकजुट होना की बात कर रहे थे, ये बस कल ही की बात है। उसमें तो सब जाति है, सब ये नहीं है। हिंदू खतरे में है, कल ही बोला गया है। हिंदू खतरे में है, कल ही बोला गया है। राम प्रताप सिंह, आपने पिछले मैं अभी इसे पिछले सेक्शन में आपने कहा था कि मथुरा में मंदिर बनाने की बात करते हैं। आप ये बताइए, अगर मथुरा में मंदिर नहीं हिंदुस्तान बनेगा तो कहाँ, अफगानिस्तान में बनेगा? सर सही, अगर राम मंदिर हिंदुस्तान में बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा। चलिए टाइम, तो टाइमिंग की बात होती है। राम प्रताप सिंह और मंदिर सहित विकास बहुत वक्त कम है, समाजवादी पार्टी के लीडर के पास जाना चाहूंगी जो उनके प्रवक्ता हैं। राम प्रताप सिंह, द फैक्ट इज how scared is the, or where does the Samajwadi Party lie, especially with the point that was raised by Rahul, my colleague? Will the RLD transfer that vote to the Samajwadi Party, especially a voter in Western Uttar Pradesh, which is very, very, very from your own history of governance? I'm very confident that because of vote transfer happening this time, because the alliances that we built up, not just with RLD but across the state,
we've had a bottom-up approach where we've looked at the ground realities of whether the communities can work together, whether the vote transfer can happen. Unlike in 2017 and 19 when we had coalitions which were top-down and the vote transfers didn't happen. So I'm quite confident of that. And I also would like to add that the issues are very real on the ground, which are across communities and religions. And one of them is the inflation, the food price inflation. But Ram Pratap Singh, so is law and order. And under your rule, whether you call it perception or the reality, law and order was abysmal. That's the perception. So I would like to just quote out of NCRB data, which has been released for 2020. And there were 6,000 plus riots that happened in the state of Uttar Pradesh. There were 3,500 murders. These are absolute figures. And they have to be viewed with a caveat that 2020 was a year when, for better part of the year, we were under lockdown. Okay. 10 seconds, Rahul. Rahul, what do you see happening on the 10th of February? Do you see the polarization rhetoric only peak from here? Pretty difficult. I think the Muzaffarnagar polarization wave, which was operating over ground, has gone underground. So if there are some bit of traction for that, it's there, but it is not going to be completely determining the mandate. And that's where lies the problem for the BJP, because when it comes to caste management, the moment the polarization goes underground, then the BJP has to manage the cards, and that's where lies the challenge for the BJP, because for the BJP, Communal works better than the Mandal. All right. Appreciate you gentlemen for joining us. Dr. Mishra, आपको आना था वापस, पर अभी कम है वक्त, पर शुक्रिया all three of you. Thank you all three of you for joining us. With that, I'm going to go into a quick break. Do stay with me. Up next is Rahul Gandhi.